Good morning to all my dear students and welcome to the Zoology online class. In the previous class, I had just started the genetics and I have that is described what is the genetics, then who is the father of genetics, why the Mendel is called as the father of genetics and why he had chosen the pea plant as his experimental tools, and under that I have started that is the method of his that is the experiment. Then I have described all about the monohybrid cross, that is a cross between two individuals, that is only that is in that I have that is I have discussed about the that is the laws, that is after the monohybrid cross he formulated three laws. One is the law of unit character, and in certain books it is not written, that is the law of unit character. That means one gene and one character, or one factor that is responsible for one character. Then the second one where that is the law of dominance. What is law of dominance? Law of dominance, I have told you that when the factors of a pair of contrasting characters, that means alternative character, factors means gene, that is eti bodoti au chutoti ye dita sangar rahile, when the factors of a pair of contrasting characters are present in one individual, one is expressible and another is suppressible. One is that is the expressible and another is suppressible. That is the tall is only expressible but the dwarf is suppressed. So the expressed character is called as the dominance character or dominant character, and the suppressed character is called as the recessive character. Clear? Mendel concluded this law from his F1 generation of monohybrid cross. When he crossed, that is in monohybrid cross, when he crossed a tall plant with a dwarf plant, in F1 generation he found only tall. When he took that is a red flower and crossed with a white flower, in F1 generation he found only the red flower. Similarly, the axial flower and the terminal flower, that is he found that is the axial flower. Clear? In this way, that is in Mendel has considered 7 contrasting characters in the pea plant. When he separately that is observed in each case, that is in F1 generation he found only one character. So he told that when that is a pair of contrasting, that means when ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଙ୍ଗରା ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲା ଡେଙ୍ଗା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଙ୍ଗରା ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ଛୁଆଟା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଦେଖେଇଲା ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ଡୋମିନେଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇ ହେଲା ନାହିଁ ସେଟା ଲୁଚିକି ରହିଲା, that is called as the recessive character. Clear? Mendel said that when the factors of a pair of contrasting character means alternating character, so this is the red and this is the white,
Similarly, this is the tall and this is the dwarf. दीटा कैरेक्टर जाक समान रही बा दीटा फैक्टर जाक गोटे इंडिविजुअल रही F1 रे किंतु से इंडिविजुअलटा हूँ टल से इंडिविजुअल दीटा हो नाही सो दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज दी डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दी जोटा चुप की रहिला सेटा हला रिसेसिव कैरेक्टर सो द टल इज डोमिनेटिंग एंड द ड्वार्फ इज द रिसेसिव कैरेक्टर क्लियर एटा को कहिले किंतु परवर्ती काल रे मेंडलଙ୍କ परे दैट इज आफ्टर 1900 when it was rediscovered the scientists all over the world tried to prove these laws on the performing the experiment on other animal दा माने other animal उपरे अन्य साइंटिस्ट माने बेटसन पोनेट ए माने सब कौन कले ना से जो लॉ गुड़ा परफॉर्म करथिले से लॉ गुड़ा को अन्य एनिमल उपरे ठीक होउचे कि नाही सेटा से परीक्षा निरीक्षा करिक देखिले हला सो ए लॉ ऑफ डोमिनेंस एटा डेविएट कला किंतु एगुड़ा का हमें लिखिबा नाही मेंडल रे कारण जेतले मेंडल पढ़िबो क्वेश्चन सेतले what Mendel has done what Mendel had done that is the question तेणु एगुड़ा आम लिखा कथा नुहे किंतु मु खाली जानिबा पई कहूची कौन ना लॉ ऑफ डोमिनेंस टा डेविएशन हला इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंट what is incomplete dominant and what is codominant what is incomplete dominant and what is codominant clear incomplete dominant माने एठी pair of contrasting character the factors of a pair of contrasting character रहिबो दीटा factor रहिबो but here no one is dominant and no one is recessive they express each factor express partially that means it is a diluting character a character which is obtained it is a dilute one eta missi jibo then it is no one is dominant and no one is recessive it missi jibo suppose एटा कोटी करथिले ना एटा गोटे प्लांट नेले से प्लांट ता होची मिराबिलिस जालाप्पा बा 4 o'clock that is 4 o'clock ए गछटा नेले रंगीनी गछ हला ए गछ को नै कि से देखिले ता देरे दीटा कलर अछि फ्लावर इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ फ्लावर one is red another is white one is red another is white clear and he crossed them से सब कौन कले साइंटिस्ट माने को क्रॉस कला परे कौन हला ना F1 रीजन रे जो that is suppose here the gamete is R here the gamete is capital R and here the gamete are small r clear and when in F1 region this is parent and this is gamete and in F1 the individual are all pink instead of red or white this is red and this is white that is he got all the F1 plants are pink they are not red or white so he said that is the law of dominance is not correct in all the cases only it is correct at the pea plant not at the that is in 4 o'clock or in most of the other animals and plants clear an intermediate color is found that is the pink तमे देखिथिबो घर पाखरे एबे आसी गलानी मुर्जो पकाया बेलो ए जो मुर्जो अछि धळा आ नाली मुर्जो मिसै देले सेटा पिंक कलर हे जाय बा गुलाबी कलर हे जाय similarly this that is they both the factors are diluted मिसी गला so that is the character is called as the pink color or the character which is often that is of a pink color clear and when he crossed the
that is took the F1 individuals and the cell for cross pollination, he found that like this. Clear? जदि गोटे साइड की आम स्पर्म साइड देखा आ गोटे साइड की ओभम साइड देखा है तो यहाँ है गैमेट यहाँ तो गैमेट जेनेसिस हम एपटे कौन हम आर आर एपटे भी आर आर सेल्फ हो कि पोलिनेट दि क्रॉस हो एका हम एका हो गला परे यहाँ है रेड यहाँ है पिंक यहाँ है पिंक किंतु यहाँ है व्हाइट. क्लियर? तेणु ये ठीक से कौ रेशियो पाइले ना 1:2:1. 1 is red, 2 is pink, 2 are pink and 1 is white. Are you clear? This is pink and this is pink, but this is red and this is white. Clear? So here this is RR, there is no hybrid or there is no intermixing or there is no, that is the genes are, the factors are here similar and the here factors are similar. So it is red and it is white and these two. So मोनोहाइप आमर सेठी जो मेंडेल करथिले कोन ना 3:1 and 1:2:1. This is phenotypic ratio and this is genotypic ratio. But here the phenotypic and genotypic are same. Here the phenotypic ratio and genotypic ratio are same. Clear? So this is the incomplete dominance. So that is the incomplete dominance deviates the law, that is the law of dominance. Law of dominance. That is the law of dominance was discarded by the discovery of incomplete. Incomplete means when, that is here when the contrasting, when the, that is the factors of a contrasting pair present together, that is here no one is dominant and no one is recessive. These two factors express their character dilutely, that means mixingly, without that is any dominant or recessive, or they, that is the express their character partially. So an intermediate character was obtained and this is, that is red and white, it is the pink. Clear? And it was found in the, that is the Mirabilis jalappa or the 4 o'clock. Clear? So this is all about the, that is incomplete dominance. Then what about the, that is the codominance? What about the codominance? It is all about the incomplete dominance. Clear? Which deviates the Mendel, that is law of dominance. Then you come to the, that is the codominance. Then you come to the codominance. It is also a deviation of the Mendel's, that is the codominance. That is codominance. In codominance, what happens? In codominance, here when the, that is the factors of contrasting characters are present together, both the character express independently. No one here is the recessive, both are dominant, both are expressing their characters. Clear? That is, suppose one red cow was crossed with a white bull. Clear? Then what happens? A cow is formed, then a child or the calf is formed. That calf is either, that is the red with white patches,
or that is the white with red patches. That is the characters expressed in mosaic fashion. Is mosaic fashion, some portion are white and some portion are red. Or it is a roan color. It is a roan color. Roan color means one hair is white, another hair is red. White, red, they remains in alternate. They remains in alternate way. That is, both the factors express their character independently. That is, here this is called as the roan color. Clear? It is also here that is the genotypic and phenotypic ratio are similar with that of the incomplete dominance. Clear? So this is codominance. In complete dominance, both are intermixing. Both the factors are intermingling and they showing an intermediate character or a new character. But here, both the factors express themselves equally. That is called as the codominance. Clear? That is, if a red cow crossed with a white bull, then the calf, the ବାଛୁରୀ जोटा हबो आइदर सेटा रेड है कि धला पैच हबो हॉलस्टीन गाय भलिया किंबा धला है कि ता देरा रेड पैच हबो किंबा गुटे कलर जदि गुटे रूम जदि तार धला हुए गुटे रूम तार नाली हबो एटा मुगा हबो बा एटा हबो रोन कलर रोन कोट कलर तान चमड़ार तार से जो लुम गुडा का रोन कलर हबो. सो दिस इज ऑल अबाउट that is the codominance. Are you understanding me or not? Clear? So this is that is the deviation of that is the Mendel's law of dominance. Then if you take the example of the blood group AB, which is that is where both the genes, that is A and B, are expressing equally for the production of antigen, So this is an example of codominance. It is an example of codominance. In case of the A, the genetical constituent may be the IA or IA-IO, because O is recessive and A is dominant. Clear? But here, that is in case of the IB and in case of the B, either it is IB or it is IB-IO. The genetical constituent, that is which I had taught you in the first year. Clear? But here, in case of the AB blood group, both that is the genes expressing themselves by producing the that is the proteins that is in the form of AB. That is the AB blood group is an example of that is the codominance, and it is the deviation of the Mendel's law of dominance. Clear? Then you come to that is the law of segregation. Another law, that is the law of segregation. That is the laws of segregation. Segregation means that is the separation. The laws of segregation means that is the separation. Law of segregation, that is called as the separation. What this law states that when the factors of an allelic pair present together, allelic alternate genes are present together, they segregate or they separate each other. They separate each other at the time of gamete formation or at the time of gametogenesis. Gametogenesis माने meiosis होबो, एटा 2n अछि, एटा nn होबो, and pass on
singly into each gamete and pass on singly into each gamete. Clear? When the factors of an allelic pair present together in one individual, they segregate or separate independently at the time of gametogenesis or gamete formation and pass on singly into each gamete. Clear? So either it may be the sperm or it may be the ovum. So this law is otherwise called as the purity of gamete. This law is otherwise called as purity of gamete. Purity of gamete for a character. That means, suppose it is a tall and it is a dwarf factor. Then when they will be segregate, at that times each character enters into each gamete. So gamete will never contain both these factors. It will contain only one. Either it is the tall factor or it is the dwarf factor. So the gamete is always pure for a character. Either it is the tall or it is a dwarf. So the gamete always contain one character of a contrasting pair. So the gamete is always pure. Gamete is not mixed, or the gamete will never contain that is both. So clear? So it is otherwise called as the purity of gamete. The purity of gamete. And he found this, or he concluded this law from the F2 generation of monohybrid cross. He concluded this law from the F2 generation of the monohybrid cross. Right? When he crossed a tall plant with a dwarf plant. Clear? That is tall plants, say T, capital T, small t. And here he took the gametes and he found that this is the F1. This is parent. So I omit here the gamete. I take the gametes directly. Clear? Parent. Clear? So this is the tall and this is the dwarf and this is the tall. He found all the individuals of F1 are of a tall variety. Clear? Then after, when he crossed the tall plant like this, you come to here. It is called as the checkerboard, or it is called as the Punnett square, or it is called as the Punnett square. You take, that is one side sperm, or you can take the spore and another is that is the ovum. Clear? So this is a T and this is a T and T. Clear? If I will take like this, here I will get like this and I will put like this. Clear? So it is the easy method. So here TT, clear? Here TT, clear? Here another I have not taken, that is the TT. Yes, I have all taken. Here another is TT and this is TT. Clear? So it is called as the checkerboard or Punnett square. So he found here this is the tall and these two are, that is the tall but hybrid tall, and this is the dwarf. Clear? From this he said that
फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट एठू तुम भाव एठी कौन है टल आसला एठी प्योर टल नुहे दिस इज ए हाइब्रिड टल बट इट कंटेन्स हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस दैट इज जेनेटिकल कॉम्बिनेशन किंतु एठी प्योर टल रो जेतला आकु सेल्फ कले एटा प्योर टल आइला एटा प्योर डॉर्फ देला ये दीटा कौन है F3 जेनेरेशन ले ये दीटा मिक्स देला ता माने एठी जो टी आसिला एठी जो टी आसिला एटा तो इमिति थिला एटा किमिति इमिति हला ये दीटा किमिति आसिला ता माने एठी गेमेट गुडाक इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो गले एटी गेमेट गुड़ाक इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो गले आउ जी जहाँ सहित पारी ता सहित रैंडमली मिसिला तेणु दैट इज द गेमेट आर जदि मिसिकी था तो सब टी होता तेणु गेमेट गुड़ाक अलग अलग हो गले सो द गेमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर ए कैरेक्टर सो दिस इज कॉल्ड एज द प्योरिटी ऑफ अ गेमेट एंड ए प्रकार जिते एक्सपेरिमेंटा अन्य साइंटिस्ट माने अन्य एनिमल उपरे कले द रिजल्ट इज सेम एंड मेंडल इज नोन फॉर दिस लॉ मेजॉरिटी दैट इज मेनली द मेंडल इज नोन फॉर दिस लॉ क्लियर सो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से कहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन ना when the factors of a pair of contrasting characters remain together in one individual, they segregate or they separate independently at the time of gametogenesis and pass on singly into each gamete. दी जन जाक सेपरेट हो जिवे आ प्रति गैमेट भितर को गुटे गुटे प्रति गैमेट भितर को गुटे कैरेक्टर बा गुटे फैक्टर जीव आउ गुटे गैमेट केबे दीटा फैक्टर रखिबो नहीं केवल गुटिए फैक्टर ही रखिबो सो इट इज कॉल्ड एज द प्योरिटी ऑफ गैमेट जदि एटा हेई न थांता ताहले ए प्रकार रे हमें प्योर टल एंड प्योर ड्वार्फ पाई न थांते केवल मेंडल एटा कर नथले ए 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रे ये समान एक्सपेरिमेंट से एया पाइथिले आउ से कंक्लूड कले दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल्स दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस देन यू कम टू द दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड हिज कंक्लूजन that is regarding the monohybrid cross. I have told you that is monohybrid cross, a cross between two that is the plant or two individuals that is taking only a pair of contrasting, considering only a pair of contrasting character. Then you come to the dihybrid cross. Dihybrid cross. It is a cross between two individual considering two pair of contrasting character at a time. Two pair of contrasting character at a time. ता माने एठी दीटा जाक कैरेक्टर दीटा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को एका संगरे परीक्षा करा गला हला बा टेकन कले मेंडल का को नेले राउंड एंड रिंकल्ड सीड सेटा तो से मोनोहाइब्रिड क्रॉस थिले से राउंड टाको पा डोमिनेंट पाइथिले रिंकल्टा नुहे सेमिति आउ गोटा नेले येलो एंड ग्रीन कलर ऑफ रिंग दैट इज द सीड एंड सेठी से कोन कले ना येलो टाको डोमिनेटिंग पाइले हला आउ दैट इज कलर सेठी से आउ ग्रीन टाको पाइले नहीं तेणु ये दीटा थिला तांकर डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्लियर तेणु मेंडल कौन कले राउंड एंड येलो नेले राउंड एंड येलो सीड एमती राउंड एंड येलो सीड नेले आ गोटे कौन नेले ना रिंकल्ड एंड ग्रीन रिंकल्ड क्रॉस कले क्या सहित रिंकल्ड एंड green color seed clear
एटा कौन है एमती एमती कुचकुचका हो मटर गुड़ा खाइब खाइले टाट खाट खाट सुधु भांगी नहीं है दैट इज एटा हला रिंकल्ड एंड ग्रीन एटा हला राउंड एंड येलो सीड क्लियर ताकू से कौन कले ना ताकू टर्मिनोलॉजिकली कौन देले सिंबलिकली राउंड फॉर देले राउंड पाई दीटा कैरेक्टर दीटा फैक्टर आर आर येलो पाई वाई वाई कारण दीटा जाक नहीं एटा हूँ डोमिनेटिंग एटा हूँ डोमिनेटिंग से दी जन को जाक को कैपिटाल दिगला तेणु रिंकल्ड रे आर आर वाई वाई सो दीज आर बोथ रिसेसिव कैरेक्टर यार जस्ट ऑपोजिट दिगला दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन आउ एटा हला राउंड एंड येलो ये राउंड एंड येलो को दिगला आर 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 वाई है तेणु यार जो गैमेट हे ये पेयर रु गोटे आसो एटा गोटे आसो है तेणु गैमेट आसो आर वाई एठी गैमेट आसो आर वाई तेणु F1 ले आर आर वाई वाई क्लियर सो द F1 parent will be द एटी दीटा रहा ए आर आर वार एटा रेड एटा हूँ दैट इज द एटा राउंड एटा हूँ रिंकल्ड तेणु ये कौन पाइब राउंड ग्रीन येलो ये कौन पाइब येलो तेणु द F1 प्लांट और F1 सीड्स आर राउंड एंड येलो ये समस्ते पाइब राउंड एंड येलो तेणु यहीटा को आम F2 को नवा दिस इज द F1 तेणु ये दीटा जाक डोमिनेटिंग कैरेक्टर रहा एठी रहा राउंड आउ एठी रहा येलो से अनुसार आम F1 ले सब गुड़ाक पाइले राउंड एंड येलो आकु आम कौन करवा ना F2 को नवा या आम F2 को नवा F2 नेले एटा सेल्फ करवा जहाँ क्रॉस करवा से एटा को क्रॉस कले जहाँ रिजल्ट पाइबा सेल्फ कले भी सही रिजल्ट पाइबा तेणु एटा हम राउंड एंड येलो यार जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन आर आर एंड वाई वाई दैट इज द F1 जेनेरेशन आम पाइचे एटा तेणु यही प्रकार रे आम दीटा नवा आर आर वाई वाई ये गोटे फर्मुला अच्छी जदि आम दी पेयरटा कैरेक्टर को आम नवा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तेन केतटा गैमेट फारिबो ना 2:n तमाने एठी आम 2 नवा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ये आम 4 प्रकार पाइबा जदि आम ट्राई हाइब्रिड नवा 2:n इज इक्वल टू 2:3 2 गुणन 2 गुणन 2 समान 8 प्रकार गैमेट पाइबा सेमिति एठी आम 2 प्रकार गैमेट पाइबा 4 प्रकार पाइबा कौन कौन पाइबा ना आर वाई गोटे पाइबा आ गोटे आर वाई गोटे पाइबा आ गोटे आर वाई गोटे पाइबा आ गोटे आर वाई है 4 प्रकार देख सब गैमेट एठू गोटे जीव सेठू गोटे आसो आम सेपारेट हो जी चा सहित रैंडम मिसिबो एमती हला यही प्रकार आमर है प्लस ताने यही प्रकार मेल साइड रू भी हम यही प्रकार फीमेल साइड रू भी हम मुझे एमती 4 प्रकार लेखिकी ये करमी ताले इट विल बी पजल्ड सो लेट मी ड्रॉ दैट इज ए चेकर बोर्ड और पोनेट स्क्वायर दैट इज द पोनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड सेटा कले एटा सुविधा हम करने दैट इज चेकर बोर्ड और पोनेट स्क्वायर सपोज clear so one side is male another side is female तेणु r y r y r y and r y small I are you understanding me or not 4 type so
R R Y Y. Capital R, capital R, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, capital Y. Capital R, small r, capital Y, small y. Here, capital R, capital R, capital Y, small y. Here, एमती एपटे क्रॉस करिवो एटा जानिथिबो तमे कर दबो. That is capital R, small y, small y. That is capital R, small capital Y, small y. That is capital R, small y, small y. Then capital R, small r, capital Y, capital Y. Capital R, small r, capital Y, small y. Then small r, capital Y, small y, capital Y, sorry. Then that is the small r, capital Y, small y. Then you come to the last one, last row. Capital R, capital Y, small y. Capital R, small y, small y. Small r, capital Y, small y. That is small r, small y, small y. You see here. Clear? So, in this way, I will get 16 offsprings, 16 variety. Clear? Offsprings. You see here, this is round and yellow. This is, you see, this is round and yellow. कारण एटा डोमिनेटिंग एठी तो टोटल प्योर एठी एटा को सप्रेस कर दबो ये एठी सेमिति आकु सप्रेस एटा होची राउंड एंड येलो. दिस इज 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 राउंड एंड येलो. This is round and yellow. This is round and yellow. This is round and yellow. देखो एटा को मु तीनटा त्रिभुज रे सजाई देमी हला. एटा को तीनटा कलर चक नाही हला. एटा तीनटा त्रिभुज रे सजाई हबो. देखो एटा एमती गला, एटा एमती गला. This all are, you see, that is here, that is all are round and yellow. Clear? और सेटा केतटा हबो 9टा हबो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हला. तेणु राइंड एंड येलो, राउंड एंड येलो ऑफस्प्रिंग केतटा हबो ना 16. अरे से चारिटा कि तीनटा नहीं कि करनोथले सो 100टा धर करथले 100टा रो प्रोपोर्शन 75टा जदि 12 होतला 25टा शॉर्ट होतला. तेणु 3:1 हला. से किंतु ए चारटा नहीं करथले ना ए जते प्रोपोर्शन नउथले ता दे से जते नंबर नउथले ता दे प्रोपोर्शन काढुथले. तापर देखो आ उटा कोन ना राउंड एंड ग्रीन. दैट इज राउंड एंड ग्रीन. ये केतटा ये तीनटा. देखो एटा भी तीनटा गोटे एंगल हबो. एटा दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन. देखो एटा गोटे ट्रायंगल रहिला. एटा गोटे ट्रायंगल. दिस वन एंड दिस वन. क्लियर? आ गोटे रहइबो आ गोटे ट्रायंगल. This one एटा होची that is the wrinkled and yellow. It is also 3. It is 9. It is 9. Then only one. This is wrinkled and green. Wrinkled and green. That is only one. Clear? So this is, that is the ratio of the dihybrid cross. This is 16. 9 plus
9:3:3:1. 9 plus, that is 9 plus 1, 10, 16. It is all total 16. And the ratio is 9:3:3:1. এটা হলা তার phenotypic ratio. This is all about the phenotypic ratio. Phenotypic ratio হলা 9:3:3:1. Then what about its genotypic ratio? 9 বুঝিলা এইটা সবু গুড়াক ডোমিনেটিং ক্যারেক্টর আর ওয়াই যেইটি থিব সেটা রাউন্ড হব ইয়েলো হব সেইপাই সেটা 9টা হয়ে গলা এমতি টোটাল এটা 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 আউ রাউন্ড এন্ড গ্রিন এটা 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 এই তিনটা আউ দ্যাট ইজ রিঙ্কেলড এন্ড ইয়েলো এটা 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 আউ এইটা রইলা রিঙ্কেলড এন্ড গ্রিন ক্লিয়ার এটা হলা রিঙ্কেলড এন্ড ইয়েলো সো লাইক দিস তো এতিক হলা ইয়ার যেতবে পুଣି দেখাগলা সেলফ করাগলা তাহলে ইয়া দেহরু সেলফ করা যাও না হাউ হোয়াট ইজ দি জেনেটিকাল কম্বিনেসন হোয়াট ইজ দি জিনোটিপিক রেসিও জিনোটিপিক রেসিও কোণ কইছিলি জেনেটিকাল কম্বিনেসন কোণ হব দেখ আর ওয়াই কেতটা বাহারলা এটা গুটে বাহারলা আউ আ ভায়া কেই নাই সো দি রেসিও অফ 9 হব 1:2:2:4 দেখ এইটা হলা গুটে ইয়া ভায়া আউ কেই নাই 2 এইটা এইটা আউ এইটা আউ কেই নাই দেখ হলা আউ এইটা হচ্ছে 2 দ্যাট ইজ আর স্মল আর ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর আর স্মল আর ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর এটা হচ্ছে দুইটা আউ ক্যাপিটাল আর স্মল আর স্মল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল আই ক্যাপিটাল আর স্মল আর এটা গোটে কম্বিনেসন ये प्रकार कॉम्बिनेशन रोचे 4टा है तेणु ये जेनेटिकल कॉम्बिनेशन हम 1:2:2:4 1 2 3 4 माने गोटे प्रकार क्लियर 1:2:2:4 आउ रहा किए 3 रे रहा एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे देख ए दुईटा समान कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आई किंतु हियर कैपिटल आर स्मॉल वाई एठी स्मॉल आर नहीं तेणु एटा गोटे 1:2 क्लियर देन आर तीनटा दैट इज आर तीनटा सेमती एटा गोटे प्रकार ये दुईटा गोटे प्रकार देख एटी स्मॉल आर कैपिटल वाई एटी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई तेणु एटी हो गला 1:2 आउ गोटे तो रहा गोटे सो दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1:2:1 ताने 9टा भाग हो गला 1:2:2 एटा 5टा चलीगला प्लस 4 ये तीन गुड़ाक हो गला 1:2 आउ गोटा को गोटा रहा सो दिस इज कॉल्ड एज दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो एंड दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो दैट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज phenotypic ratio that is the phenotypic ratio but what is the genetical constituent of them it is called as the genotypic ratio that is 1:2 that is 2:4:1:2:1:1 so this is that is the genotypic and phenotypic ratio clear then I will take that is and on this regards he that is concluded only one law he concluded only one law on this that is that dihybrid cross that is called as the law of independent assortment which I will narrate in the next class. Thank you to all.